education, but its most important function to my mind is to act as a record of its, take you into a world of fantasy, but it will give you the facts, place them before you, and leave you objectively to draw your own conclusions. Now, I thought that, I had no idea I was going to be addressed as the Ayatollah of acting and mountain of eloquence and so on. I have to live up to that somehow. I thought that just my glamorous presence would suffice, but I was told that I was expected to say a few words to express my opinion on terrorism. So I realized that I can't, as usual, just crack a few jokes and sneak away. But really, what am I supposed to say about terrorism that hasn't already been said a million times over? So I will desist from using the same volume. They would have no hesitation in tying a bomb to themselves and going to meet those 47 or 57 virgins that they have been promised. It is something I think that the Muslim community, in fact, both communities need to engage with and introspect deeply on. The right kind of education for the generations to follow. It is something that we really need to think deeply about and help set right wherever we can. It is time to bury old skeletons forever, not keep uncovering them. It is time to stop spreading hate. And it is time that we really thought deeply about why religion, which could be the most beautiful thing on earth, is turning into perhaps the ugliest. Thank you so much, sir, for those profound thoughts. My dear friends, on this momentous day, how could we have not Nazir speaking on writing this wonderful book? So, my dear friends, as sir already highlighted, Nazir is all. Definitely would want to see Naseer sir in the book because he is in the film because he is my. My question is to the author, more than less. So you were writing about something on which a judgment has already been passed, and we know how difficult it is to, not attract. Okay, so the edge that you have when you're a journalist is that you're supposed to take both the sides. You approach both the sides and you give the other side a chance to talk. So that as a journalist, really, as a writer, really helps you because you know that there is another side of the story. So when you talk about the prosecution's case in court, you also talk about what was the defense in court. Did they really have something to say? Because a lot of times we get lost in the nitty-gritties. But those nitty-gritties lead us to something much, much bigger when it comes to cases in court. Cases that are hyped sometimes fall apart in court. They don't always hold. But yes, to answer the question, approaching both the sides and representing both the sides fairly without any biases is what we've done in the book. Actually, there were scores and scores of documents to go through. There were, huge bundles of charge sheets. So, my dear friends, as this moment of reckoning happens, I would like to tell you that it was Naseeruddin Shah sir's request to have a victim come on stage and unveil this book right in front of us. What a noble gesture. My dear friends, let your applause be relentless for this wonderful moment.
अगर मैं नहीं आ पाऊँ तो Rolling everyone. Rolling. Hi sir. सर की बात कर रहे हैं आप, आपको ऐसे कई किरदारों में हमने देखा है, आम इंसान की बात की गई। आपने कौन सी मैंने पूरी किताब पढ़ी है और मैं रिलेट करने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये ऐसा हादसा है जिसके साथ आप अपने आप को जोड़ नहीं सकते। इससे दूर रहकर ही इसको समझना पड़ेगा। दिल पे बहुत असर हुआ, कई सवाल उठे दिमाग में और इन्फॉर्मेशन मिला। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है जो मुझे लगा कि काफ़ी ऑब्जेक्टिवली पेश किया गया और बहुत ही अच्छी तरह से लिखी गई है और बहुत मेहनत की है लेखकों ने ये सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में। सर आपके जहन में कौन सा सवाल जब उठता है, जब आए दिन गए, जब टेरर के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि ये सब कब ख़त्म होगा और ये कभी ख़त्म होगा भी या नहीं, या ये सारी दुनिया को लेकर डूबेगा अपने साथ टेररिज्म, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। लेकिन बॉलीवुड हमेशा निशाने पे रहता है जब भी टेरर का मुद्दा होता है या फिर बीच। हाँ, मुझे मालूम था आप यहीं पे आने वाले हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है? किसके बारे में? फिल्म इंडस्ट्री हमेशा फिल्म इंडस्ट्री बहुत आसान टारगेट है और फिल्म इंडस्ट्री भले ही लोग बहुत प्यार करते हैं लेकिन हमें रिजेंट भी उतना ही करते हैं और अटैक करके उन्हें उतना ही मज़ा भी आता है जितना बॉलीवुड की फिल्मों को देखकर। क्या लगता है बॉलीवुड क्रेडिबिलिटी में मतलब दरारें आपस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि कुछ संगठन जो है उनके खिलाफ लड़ नहीं सकते, उनकी ताकत नहीं कम टेररिज्म को या पाकिस्तानी आर्टिस्ट को या काम करते थे, पर आपने पहले भी कहा था पाकिस्तान गए थे तो लोग काफ़ी प्यार देते थे। क्या कल्चर को या आपको लगता है कि देखिए, हमने पाकिस्तान से डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं तोड़े हैं, ना हमारी पाकिस्तान के साथ जंग हो रही है, ना बॉर्डर्स सील हुए हैं, सिर्फ आर्टिस्ट को टारगेट बनाया जा रहा है जो कि बेसिकली अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर आते हैं और वो इसलिए कि बहुत आसान निशाना है आर्टिस्ट। मेरे ख्याल से जो शूरवीर उनको मारने की और थिएटर जलाने की धमकियां दे रहे हैं, उनको सरहद पे जाके दुश्मनों के कैंप्स को जलाना चाहिए और पाकिस्तानी घुसपैठियों को मारना चाहिए। निहत्ते डिफेंसलेस आर्टिस्ट को धमकियां देकर ये कौन सी बहादुरी है? आपके नज़रिए से टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए क्या तरीका ठीक रहेगा? अगर मेरे पास इसका जवाब होता तो मैं कभी का उस पर अमल कर चुका होता। सर आपका कहने का मतलब संबंधी खराब ना हो और टेररिस्ट खत्म हो जाए, वो रिलीज नहीं। जिस फिल्म को सेंसर ने सर्टिफिकेट दे दिया है वो क्यों नहीं रिलीज होनी चाहिए? उस पर रुकावट क्यों आनी चाहिए? और मैं करण जौहर का कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन ये फिल्म मैं ज़रूर देखूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी भी क्रिएटिव इंसान को सपोर्ट करना चाहिए जो अपना काम दिखवाना चाहता है। हालांकि गवर्नमेंट ने भी पूरा आश्वासन दिया है कि वो इस फिल्म को रिलीज़ करने देगी। तो ये जो करण जौहर ने जो गिड़गिड़ा के माफ़ी मांगी, मेरे ख्याल से इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। थैंक यू सो मच।